Hi everyone, I hope you all are doing well. Today video is about IELTS writing test. IELTS writing test is a component of the International English Language Testing System exam. It assesses your ability to write in English. यानी पहले लिसनिंग टेस्ट होता है आपका जिसमें देखा जाता है कि आप इंग्लिश को सुनकर कितना समझ पाते हैं। फिर आपका जो है वो रीडिंग टेस्ट होता है कि जब वो लिखी हुई इंग्लिश है उसको आप कितना कंप्रीहेंड कर पाते हैं। और ये तीसरा टेस्ट जो है ये आपका राइटिंग टेस्ट होता है कि आप जो है वो लिख कितना पाते हैं, कितना जो है वो आपकी वोकेबलरी बेस्ट है और कितना आपका जो है वो थिंकिंग कैपेसिटी बेस्ट है इंग्लिश में। इसके जो है वो दो टास्क होते हैं। इन टास्क 1 यू विल बी प्रेजेंटेड विद अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सच एज अ ग्राफ, चार्ट, टेबल, अ डायग्राम। योर टास्क इज टू डिस्क्राइब एंड समराइज द इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स। इसको करने के लिए चार जो है वो स्टेप्स अगर आप फॉलो करें तो आपके लिए इजी हो जाता है करना। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, इंट्रोड्यूस। जो भी आपको टेबल दिया गया है, चार्ट या डायग्राम, आपने सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करवाना है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। पहला तो है इंट्रोडक्शन। बिगिन बाय पैराफ्रेजिंग the question and providing an overview of the main trends or key features shown in the visual. This should be a brief summary of what the visual represents. यानी सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन आता है कि आपने जो भी ग्राफ्स डायग्राम दी गई है आपने थोड़ा सा उसके बारे में बताना है कि ये एक्चुअल में है क्या। सेकेंड आ जाता है यूज स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम द विजुअल टू सपोर्ट योर डिस्क्रिप्शन, फोकस ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स, कंपैरिजंस एंड कंट्रास्ट। यूज एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द डेटा। थर्ड पे आपने लैंग्वेज और स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यूज अ मिक्स ऑफ सिंपल एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी रिलेटेड टू द टॉपिक एंड द डेटा प्रेजेंटेड। Use appropriate verb tenses and connectors to link ideas together. Last and important one, summarize and conclude. In the final paragraph, summarize the main points and provide a clear conclusion based on the information presented. You can highlight any significant findings or trends that emerged from the data. यानी ये 4 steps कौन से हैं? सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, फिर आपने उसके बारे में एक पैराग्राफ जमा लिखना है, उसमें आपकी लैंग्वेज और स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और लास्ट में आपने जो है उसको कंक्लूड कर देना है, और यानी आप उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं या आप उस इन्फॉर्मेशन से क्या नतीजा जो है वो अखज़ करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है सेकंड टास्क। इन सेकंड टास्क यू मे एनकाउंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे प्रॉम्प्ट्स। हियर आर फ्यू कॉमन टाइप्स। सबसे पहले जो है वो है ओपिनियन ऐसे, यानी आपने जो है किसी भी टॉपिक को लेकर अपने ओपिनियन का इजहार करना है जो उन्होंने दिया हो। यू विल बी आस्क्ड टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन अ गिवन टॉपिक एंड सपोर्ट इट विद रेलिवेंट रीजंस एंड एग्जांपल्स। यानी सिर्फ आपने अपनी राय का इजहार नहीं करना बल्कि आपने इसको प्रूव भी करना है रीजंस और एग्जांपल्स देकर। फॉर एग्जांपल, सम पीपल बिलीव दैट टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर। डू यू एग्री और डिसएग्री? Provide specific examples to support your opinion. Second, discussion essay. You will be presented with a statement or an issue, and you need to discuss both sides of the argument before stating your own opinion. For example, some people argue that social media has a positive impact on society, while others believe it has negative. यानी ये क्या है कि डिस्कशन आपने करनी है, आपने दोनों जो है पहलुओं को अपनी नज़र में रखना है, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी, और आपने उन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी राय जो है वो देनी है और उसको प्रूव भी करना है कि आप अगर इस साइड पर हैं, अगर एग्री कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, अगर डिसएग्री कर रहे हैं तो उसके क्या रीजंस हैं। डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओन ओपिनियन। आपने दोनों को देखना है और फिर अपनी राय देनी है। थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्यूशन essay. You will be asked to identify a problem and propose possible solution to address it. For example, in many cities, traffic congestion is a major issue. What are the causes of this problem and what measures can be taken to alleviate it? यानी आपने जो है पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है और फिर उसका सॉल्यूशन देना है। For advantages and disadvantages essay. You will be required to discuss the pros and cons of particular situation, technology or phenomenon. For example, what are the advantages and disadvantages of studying abroad? Discuss both the benefits and drawbacks. यानी आपने उसकी खूबियाँ भी बतानी है और उसकी खामियाँ भी डिस्कस करनी है। अब देख लेते हैं कि टाइम कितना अलॉट किया जाएगा। You will have a total of 60 minutes to complete both task 1 and task 2. It is recommended to spend approximately 20 minutes on task 1 and 40 minutes on task 2. यानी ये दोनों काम करने के लिए किसी भी टेबल, डायग्राम, चार्ट वगैरह को जो आपने डिफाइन करना है
और साथ में जो ऐसे लिखना है। ये टोटल आपको दोनों टास्क के लिए 60 मिनट्स दिए जाएंगे। तो ये बेहतर है कि आप जो है 20 मिनट्स टास्क 1 को दे दें और जो 40 मिनट्स है क्योंकि वैसे लिखना होता है तो वो जो है आप टास्क 2 को दे दें। फॉर टास्क 1, ट्राई टू एलोकेट अराउंड 5 minutes for planning and organizing your response and then spend the remaining 50 minutes writing your description or summary. For task 2, set aside about 5 minutes for brainstorming and planning your essay. Use the remaining 35 minutes to write a well-structured essay with a clear introduction, body paragraphs and a conclusion. इस तरह से जो है वो आपकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो अच्छी हो जाएगी क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है वो क्रूशियल है। The more you practice and familiarize yourself with the test format, the more comfortable and confident you will become. अब कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आप और ज़्यादा जो है एफिशिएंट वे में इसको जो है अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहले तो आपने इस टास्क को अंडरस्टैंड करना है। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट द विजुअल रिप्रेजेंट्स एंड व्हाट इंफॉर्मेशन you need to include in your response. Pay attention to any specific requirements such as comparing data or describing trends. यानी सबसे पहले तो आपने उसको comprehend करना है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है और वो क्या बयान कर रही है, क्योंकि आपने जब उसको डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपने लिखना भी इंट्रोडक्शन नहीं है। उसके बाद सेकंड है एनालाइज द विजुअल। टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू केयरफुली एग्जामिन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आइडेंटिफाई द मेन ट्रेंड्स, patterns and significant features. Note any key numbers, percentages or comparison that stand out. Third, plan your response. Before you start writing, spend a few minutes planning your essay. यानी आपने जो है प्लान भी करना है कि आप जो है रिस्पॉन्स क्या देने वाले हैं जो अगले बंदे को जो है जो चेकर है उसको इफेक्ट करे। Outline the main points you want to include in each paragraph. This will help you maintain a clear and organized structure throughout your response. 4. Use appropriate vocabulary. Most important है, utilize a range of vocabulary related to the topic and the data presented. This will demonstrate your language skills and help you accurately describe the information. Pay attention to specific verbs, adjectives, and adverbs that are commonly used in describing data. 5. Include specific data. Support your description with specific data from the visual. Use numbers, percentages, and comparisons to provide accurate and detailed information. 6. Is organize your writing. Structure your essay with clear paragraphs. Start with an introduction that provides an overview of the visual, followed by body paragraphs that focus on different aspects of the data. Use appropriate connectors to link ideas and create a cohesive flow. 7. टाइम मैनेजमेंट। एलोकेट योर टाइम वाइजली। जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि आप टास्क 1 को जो है 20 मिनट्स दे लें और टास्क 2 जो है जो ऐसे से रिलेटेड है उसको 40 मिनट्स दे लें ताकि आप जो है वो दोनों टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकें। And the last one, practice regularly. Familiarize yourself with different types of visual and practice writing response. यानी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करनी है। प्रैक्टिस के बगैर जो है वो आप इसको अटैम्प्ट करने में आपको बहुत मुश्किल आएगी। तो इसलिए बार बार मैं हर टेस्ट की दफ़ा कहती हूँ कि प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करें। अब आप कहाँ से कर सकते हैं, मैंने पहले भी कुछ चैनल्स और वेबसाइट्स बताई हैं, जैसे आइल्स लिस्ट है, आइल्स एडवांटेजेस है, इसके अलावा टेडी भी है। ये भी यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको जो है बहुत ज़्यादा इंगेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएंगी। Watching these videos can help you improve your listening skills, expand your knowledge, which can be beneficial for your writing and other tests. तो आपने जो है इनको वेबसाइट्स को और यूट्यूब चैनल्स को जो है वो सर्च करें जो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, जिसके साथ आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, जो इजीली आपको जो है वो समझा पाते हैं और आप इजीली उसे समझ पाते हैं, उसको जाके विज़िट करें और वहाँ से जो है वो लर्निंग स्टार्ट करें। आइल्स साइमन है, वेबसाइट है ये, यहाँ पर भी आपको बहुत सारा सैम्पल एसेस मिल जाएंगे, लेसन्स मिल जाएंगे ऑन हाउ टू अप्रोच डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क ऑन क्वेश्चन। इट ऑफर्स वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग अ हाई स्कोर। आइल्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स भी है जो ये प्रैक्टिस मटेरियल्स फ्राहम करती है, सैम्पल क्वेश्चंस जो हैं वो फ्राहम करती है टास्क 1 से रिलेटेड, टास्क 2 से रिलेटेड। तो इन साइट्स को और यूट्यूब चैनल्स को लाजमी विज़िट करें और ये याद रखें कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका बैंड स्कोर जो है वो अच्छा आए। तो बस आपने ये नारा लगाए रखना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और इस पर अमल करना है। बेस्ट ऑफ लक।